जेकर कोरोना वैक्सीन ना लगवाई तो हैल्थ टैक्स देना पवेगा। कैनेडा के सूबे क्यूबिक की सरकार के वलों कोरोना वायरस के वध रहे प्रभाव के मद्देनज़र यह फैसला लिया है, क्योंकि वड्डी गिणती च सूबे च अजिहे लोग ने जो कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। अजिहे च सरकार ने हैल्थ टैक्स का नियम बनाया है। Those who refuse to receive their first dose in the coming weeks will have to pay a new health contribution. कोरोना के खतरे विचाले क्यूबिक के प्रीमियर का बयान वैक्सीन का विरोध करने वालों के होश उड़ा रहा है। क्यूबिक के जिन्हों लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लवाई, उन्होंने हैल्थ टैक्स लगेगा। फिलहाल हैल्थ टैक्स के वजों किन्ने पैसे वसूले जाएंगे तो कदों लागू होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। For CHSLDs, the situation is difficult, but it doesn't compare to what we saw during the first wave. We have a lot more workers, and almost all residents now have their 3 doses. The vaccine is the key to fight the virus. This is why we're looking for an health contribution for adults who refuse to be vaccinated for non-medical reasons. Those who refuse to receive their first dose in the coming weeks will have to pay a new health contribution. ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਕਈ ਰੀਜਨਲ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡਸ ਨੇ 80% ਤੱਕ ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Everybody is trying to find a solution, question of equity, because right now these people they put a very important burden on our healthcare network. And I think it's normal that the majority of the population is asking that there be a consequence. And yes, we will continue to look at spreading the use of the vaccine passport. But I think we have to go further. And I think that right now it's a question also of fairness for the 90% of the population who made some sacrifices. कोरोना कारण सूबा पद्धर के उत्ते कर्फ्यू ते नियम सख्त किए गए हैं, जिन्हां दा विरोध भी हो रहा है। क्यूबेक अल्बर्टा च कर्फ्यू खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग खुल की मांग कर रहे हैं। क्यूबेक च कर्फ्यू लागू किया गया है। रेस्टोरेंट डाइनिंग रूम्स बंद किए गए हैं। कोरोना कारण स्कूल बंद ने। अल्बर्टा च भी फिलहाल स्कूल नहीं खुलणगे। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने स्कूलों को घट्टो घट्ट 2 हफ्तियां दे लई ऑनलाइन कर दिता सी। The investments we've made in our hospitals are larger than any previous government in the history of Ontario. But with a variant as infectious as Omicron, with spreads like nothing we've seen before, added capacity alone isn't enough. We need to implement measures that further reduce contacts and mobility. Effective Wednesday, January 5th at 12:01 a.m., Ontario will return to a modified Step 2 of the roadmap to reopen. The plan will be released before we confronted Omicron, laid out 2 clear reasons why we would implement province-wide measures. First, the introduction of a new variant. Second, if our healthcare system was threatened. Today, we face both of these. इस दे नाल ही रेस्टोरेंट अते बार च इंडोर डाइनिंग बंद की गई है। आउटडोर डाइनिंग, टेक आउट, डिलीवरी ते ड्राइव थ्रू नूं मंजूरी है। इंडोर च जनतक इकट्ठ 5 तक सीमित किया गया। आउटडोर थावां ते 10 लोग इकट्ठे हो सकणगे। रिटेल स्टोर्स, मॉल्स ते पर्सनल केयर च 50% कैपेसिटी लिमिट की गई है। विआह, संस्कार ते धार्मिक समागम च 50% इकट्ठ नूं मंजूरी है। आउटडोर इकट्ठ च 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी है। ओंटारियो च लोकां नूं वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਓਲੰਪਿਕਸ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਛੂਟ ਹੈ। ਆਊਟਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਗੈਲਰੀ, ਚਿੜੀਆਘਰ, ਸਾਇੰਸ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। Measures include reducing social gathering limits to 5 people indoors and 10 people outdoors, requiring businesses and organizations to ensure employees work remotely unless the nature of their work requires them to be on site, closing indoor dining at restaurants, bars, and other food or drink establishments while permitting outdoor dining with restrictions, takeout, drive-through, and delivery. Closing select indoor settings, including theaters, cinemas, and museums, but permitting outdoor establishments to open with restrictions. Closing indoor sport and recreational facilities, including gyms, and permitting outdoor sport facilities to operate with certain requirements. Retail settings, including shopping malls, will operate at 50% capacity, along with personal care services. And indoor weddings, funerals, and religious services will be limited to 50% capacity, with outdoor services limited to the number of people that can maintain 2 meters of physical distance. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 39,630 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 26,24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 30,958 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 2,86,000 ਕੇਸ ਨੇ, 2449 ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 8,96,000 ਕੇਸ ਨੇ, 10,399 ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ 7,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ, 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ 4,17,000 ਕੇਸ ਨੇ, 3,352 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।